Has political pressure led to the choice of World Cup cricket venues in India? That seems to be the allegation being made by different quarters. I have three interesting pointers. One, the World Cup semi-finals will be held in two venues, Kolkata's Eden Gardens and Mumbai's Wankhede Stadium. The Chidambaram Stadium in Chennai has been given a thumbs down. Two, the reason being offered is that the retreating monsoon might be a threat if a match is held in Chennai then. Another big user is Punjab's Mohali Stadium, which hosted, if you remember, the famous iconic match between India and Pakistan in 2011 during the World Cup, and the semi-final was held there. Both states, by the way, are governed by non-BJP parties. Number three, Tamil Nadu's M.K. Stalin has a tenuous relationship with the BJP at the centre, so does Punjab's AAP government. The Maharashtra state government is the only state which has been given two venues, Mumbai and Pune. And by the way, Maharashtra might go in for midterm polls where the stakes for the BJP are sky high. Delhi has also been treated shabbily by being given some low-profile games. So continuing with this very interesting chat, I have my good friend CS with me, and coming to him, he's just written an article recently for a website, and as usual, pretty explosive comments from you, CS. I thoroughly enjoyed reading it, and we are using some of the pointers in this show also. My opening question to you would be that some of the feedback, or rather the pushback that is coming from different quarters, is all related to politics, not to cricket. For example, why Mohali was left out. Yes, I do understand. I saw the soundbite given by Mr. Rajiv Shukla saying that the ICC has not approved the venue, so what can we do? But the same doesn't apply to Chennai's downgrade, to Delhi's downgrade. So many other things are happening. What are your initial thoughts that should a World Cup of this magnitude be held like this? Well, never take Rajiv Shukla seriously. That's my first remark. He is nothing but a middleman of cricket. In politics he does the same. In cricket he has no standing apart from the fact that he keeps on traveling between one place to other just to fix the things. So I don't take him seriously at all. Number one. Number two, when we talk about Mohali, Mohali is the main venue of India when it comes to, for last 3 decades or so, if you remember. Every big match, every test, big test, or every, important match is always being given to Mohali for 2 reasons. One is, it is the main center of North India. Not the Delhi, because Delhi stadium had a lot of problems with the pitch and also with the stadiums in between, and a lot of issues with the permissions and everything. There's a lot of problems. So Mohali is the main center of North. One. So now that has been shifted to now because of Mr. Anurag Thakur. He's the sports minister, and now Dharamshala is getting, imagine, matches, but 5 matches, but not Mohali. So another thing. Second, when we talk about Chennai also. I just want to ask you one clarification, because when someone like Rajiv Shukla says, standing in front of several mics, that Mohali was basically left out because the ICC did not approve, and you are basically saying that Delhi Stadium is perhaps in a worse shape than Mohali, so why Mohali? For the viewer, my point is, what is ICC in this matter? ICC does everything what India says. If you talk about India Pakistan matches, do we listen to ICC? We don't travel to Pakistan. We don't go there, or we don't approve the venues which Pakistan says that as a host Asia Cup country, we have to यहाँ पर मैचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. We don't listen to anybody. Please don't give me this excuses कि ये ICC कह रही नहीं. ICC वही अप्रूव करती है जो आजकल फिलहाल मिस्टर जय शाह कहते हैं. This is a pure politics. Let me tell you. अगर मुझे कोई आज की डेट में कहे कि किसी की कोई भी, मैं एक बड़ा खतरनाक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि किसी की कोई भी औकात है, कोई सामने बोल भी सकता है
इट्स लाइक ए फेडरल स्ट्रक्चर, यू नो, क्रिकेट बीसीसीआई फेडरल स्ट्रक्चर था, स्टेट्स जो बोलती थी वो हावी होती थी, उनके वोट की वैल्यू होती थी। बट फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, आई वुड से 3-4 साल से, जब से मिस्टर जय शाह आए हैं, ना तो सुप्रीम कोर्ट की वो सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना वैसा ही फैसला देना पड़ता है जो उनको सूट करता है। ठीक है, ये बहुत ब्लेटेंट चीजें चल रही है। तो और अच्छा, फिर राजीव शुक्ला कौन है? राजीव शुक्ला इज नो वन, इनका कुछ नहीं चलता। लेट मी टेल यू, मैं 30 साल से बीसीसीआई कवर करता हूँ, ये कुछ नहीं है सर। ये लोग अपनी करप्शन बजाते हैं यूपीसीए की। ये इन्होंने सडनली कहीं से, वो कहते हैं ना, बस दो लोगों को मिला करके लखनऊ के स्टेडियम को आजकल पक्का कर दिया, क्योंकि वहां से पर स्टेक्स हाई हो गए हुए हैं। तो ये इन लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है। ये लोग सिर्फ वो बोलते हैं जो इनको तोते हैं, ये लोग, यू नो, पैरट्स जो होते हैं, जो इनको बोला जाता है। इनको अगर बीसीसीआई में कुर्सी ना मिले, या वहां पर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, इनको कई बार बैठने को भी ना बोले, तो ये चुपचाप खड़े हुए भी अपने भाषण दे देते हैं। तो आई डोंट टेक देम सीरियसली एट ऑल। प्रॉब्लम इज कि चेन्नई ऑलमोस्ट सर्टेन था टिल द लास्ट आवर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक चेन्नई में एक सेमीफाइनल होना था। क्यों हुआ? क्योंकि चेन्नई में स्टेक्स बदल रहे हैं, साउथ इंडिया में पॉलिटिक्स बदल रही है बीजेपी की। बीजेपी इज गोइंग लाइक, मतलब कि जो जो पॉलिटिकल उनके जितने भी एस्पिरेशंस हैं, वो क्रिकेट के थ्रू भी चल रहे हैं। वहां पर कहां पर मैचेस जाएगा, रोटेशनल पॉलिसी वाला नहीं चल रहा अब, जो पुराना चलता था। या मेन जो क्रिकेट सेंटर्स थे, लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर अरूप, लास्ट टाइम में करीब 7 सेंटर्स में पूरे मैचेस हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 या 8, 8 भी नहीं शायद, 7। इस बार 10 सेंटर्स है, 10 में भी मोहल्लिया नहीं आया क्या? ताकि कि उस 10 सेंटर्स में भी मोहाली को ना आ सकते थे। तो इट्स ए प्योर पॉलिटिक्स। चेन्नई को क्यों लूज किया, ये मुझे लगता है कि प्योरली पॉलिटिक्स है। इसमें Yes, भी स्टालिन साहब की, where Chennai is concerned, let us also recall that time when Wasim Akram's team got a standing ovation from the Chennai crowd, and it became one of their favorite venues. So, over and above the MK Stalin politics, who obviously doesn't get along too well with the BJP at the center, and now they are saying that a retreating monsoon could be one of the reasons. So, well, it is raining very regularly at the Ashes also. So that cannot be a valid reason according to me. So, when it comes to Chennai being shafted, should one read purely as a political diktat? देखिए, जहां तक मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, जहां तक मुझे मालूम है, लास्ट मोमेंट तक चेन्नई सर्टेन था। और दूसरा बेंगलुरु भी मतलब कि काफी हद तक डिसाइडेड था। जो 2 सेमीफाइनल्स थे वो बेंगलुरु और चेन्नई के थे। वो सडनली कोलकाता क्यों चला गया था? कोलकाता, आई नो इट फॉर श्योर कि ये मिस्टर जय शाह ने अपने पर्सनल लेवल पर ये चेंज किया टू प्रोबेबली प्लीज, वन इज के बीजेपी के स्टेक्स बहुत हाई हैं, अगले इलेक्शंस में भी वहां से सीट चाहते हैं। और दूसरा, दादा को भी कहीं ना कहीं उस गेम में, जो पहले जो बीच में खटपट चल रही थी, शायद दादा को भी थोड़ा प्लीज करना चाह रहे थे। तो कोलकाता इसलिए मिला। जो दूसरा सेंटर चेंज हुआ है, जो बॉम्बे, वो प्योरली लास्ट में चेन्नई को साइड लाइन करके उनको किया गया है। तो इसलिए इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं। और दूसरा, पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि अगर वो मैचेस कहीं पर खेलना चाहेंगे, वो चेन्नई एक सेंटर है। कोलकाता ऑब्वियसली दे ऑलवेज लाइक इट, लेकिन चेन्नई के लिए देवर ओके, चेन्नई और कोलकाता। तो मुझे लगता है वो भी एक दिखाने का है कि हम चेन्नई को बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से अगर सेमीफाइनल जैसे एक चांसेस तो नहीं है, खैर मुझे नहीं लगता कि अब कोई चेंज होगा ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान का जो मैचेस हैं, जो खासकर अहमदाबाद में वो लीग मैच खेलने वाले हैं इंडिया के साथ शुरू में, अगर उस मैच का कोई भी चेंज हुआ और अगर पाकिस्तान ने थोड़ा भी, अगर अभी थोड़ा कहते हैं ना मुट्ठी अभी नहीं खोली है उन्होंने, उनके नए चुनाव होने वाले हैं पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर उन्होंने थोड़ा सा कस के रखा अपना शिकंजा, तो हो सकता है कि वो वाला मैच, मुझे ये गट फीलिंग है और मुझे सिग्नल्स भी मिले हैं कि वो मैच अभी भी चेन्नई जा सकता है। लेकिन अगेन, ये मैंने कहा, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में कोई ना राजीव शुक्ला बताएंगे ना कोई और बताएगा। Okay, let's move on. When coming to Madhya Pradesh, there is an indication that the state cricket body headed by Jyotiraditya Scindia, and let's also remember his illustrious father Madhavrao Scindia, whom I've met many times in the past. So, an avid cricketer himself. Now, suddenly Madhya Pradesh also gets ignored, and then there are indications that Scindia has problems with the local BJP leaders. So, CS, is that reason enough? This is how you can calculate. अगर सिंधिया के साथ प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे होलकर स्टेडियम को कैसे आप, जो इंदौर का स्टेडियम, वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड, आई वुड से,
नॉट लाइक दिल्ली जो कार पार्किंग एक पुराने वाले हमारे नेता बना करके चले गए हैं. सो इन ए वे आई थिंक उनको इग्नोर करना इज अगेन प्योर पॉलिटिकल थिंग. एंड वन मोर सेंटर विच हैज आई हैव नॉट मेंशन, मैंने डेलिबरेटली उसको नहीं मेंशन किया क्योंकि मुझे वो पॉलिटिक्स में जो कहते हैं ना, ये एक पॉलिटिक्स तो है बीजेपी की पॉलिटिक्स, एक है मिस्टर जयशाह या बीसीसीआई की भी पॉलिटिक्स, वो है नागपुर. नागपुर को आप भूल मत जाइएगा, मैंने मेंशन जान के नहीं किया. नागपुर में भी मैच नहीं दिए गए. क्या वो सेंटर नहीं है आपका? सिर्फ प्योरली इसलिए क्योंकि बीसीसीआई इंटरनल पॉलिटिक्स में मिस्टर शशांक मनोहर वहां पर कंट्रोल करते हैं, जो कि इनकी सुनने से मना कर रहे थे, या इनको इससे पहले बीसीसीआई को भी इन्होंने नुकसान किया कहते हैं, वो एक अलग चर्चा है, वो भी फाइनेंशियल मैटर्स. लेकिन जय शाह और इस कोठरी के साथ उनकी नहीं बनती, तो उनको बिल्कुल रूल आउट कर दिया गया. कैन यू इमेजिन कि नागपुर भी, जहां पर आरएसएस का मेन सेंटर है, उसको भी सिर्फ पॉलिटिकली अपनी पॉलिटिक्स की वजह से उसको साइड कर दिया गया. इसलिए मैंने उसको शायद मेंशन नहीं किया. Okay, let's come to Delhi's Arun Jaitley Stadium, and like most of us One of the agree, worst stadiums, one of one the of the worst worst, stadiums I have ever seen in the world. one of the ugliest stadiums also, but it has not been given Yes. any high flying matches. So they will host 5 games, and one of the matches will be India against Afghanistan. But the other interesting bit that you've mentioned is the fight between Arun Jaitley's son, who is the DDCA president, and the secretary Siddharth Verma. We both know their fathers very well. So Arun Jaitley in the past, and of course Sahib Singh Verma also in the past, and his son is there engaging and having a go at Rohan Jaitley, who has been allegedly accused of sexual harassment. So tell me something, CS. You know the DDCA politics better than most. Is that again a reason enough to steer away from Delhi or to downgrade it, or are they trying to hide something? In the last BCCI meeting, जो कुछ दिन पहले हुई थी in Ahmedabad, when there was a match also, you know, what match we were playing, I'm just forgetting, जिसमें सभी लोग आए हुए थे और हाई फ्लाइंग पूरे पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे. तो उस मैच में उस मीटिंग के दौरान nobody entertained रोहन जेटली. Nobody even spoken to him. I mean, spoke to him. He was completely उसको bypass कर दिया गया. So he was there for almost 2 hours और उसके बाद वो भी निकल गए. उनको समझ आ गया दाल नहीं गल रही है. So these are serious matters. जो alleged sexual harassment के केस है. There are so many photographs in the market. They are doing the rounds. वो WhatsApp पे चल रहे हैं. ये बहुत embarrassing हो गया हुआ है for the cricket authorities also. And this lady. Right. Yes. Okay. Sorry. So this lady in question, she has written, at least I have 2 emails with me. She has written to all the authorities, and but I don't know why she has not filed an FIR. So that is their internal issue. I don't understand that. But yes, she has written, and still there is no inquiry whatsoever from the BCCI side. Again, against one of the biggest association, one of the top association of India, और उनके प्रेसिडेंट इस तरह से इन्वॉल्व है. नंबर 1. अच्छा, देन सेकंड, इन द सेम मीटिंग दे हैव अप्रूव्ड द न्यू फॉर्मेशन, जो भी नई कमेटी जो बननी थी, पॉश कमेटी जो उन्होंने बनाई है इंटरनल सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को लेकर के और सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड केसेस इन ऑल द स्टेट्स. तो उस कमेटी का भी उसमें गठन किया गया लास्ट में. तो मुझे लग रहा था कि उसके बाद से कोई कार्यवाही होगी, लेकिन देयर हैज बीन नॉट मतलब कि नथिंग हैज डन इन द लास्ट 15-20 डेज. तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है. और दूसरा क्या है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है, आई अंडरस्टैंड इट्स अगेन बीजेपी मैन वर्सेस बीजेपी अदर पर्सन. सिद्धार्थ वर्मा इज ऑल्सो उसके ब्रदर भी बड़े, परवेश वर्मा इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और रोहन जेटली एवरीबडी नो उसके फादर उनके कितने हाई फ्लाइंग मिनिस्टर थे. तो दोनों का ये सेटल नहीं हो पा रहा है. दिस हैज गॉन टू इवन द सेंट्रल कमांड. ये जो प्रूफ्स हैं, जो इसके फोटोग्राफ्स हैं, जो इसके अदर जो जितनी भी कंप्लेंट्स है, वो सबको दी गई है. ये मेरी नॉलेज में है. बट उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था. देयर इज समथिंग या तो कोई इस पचड़े में नहीं
चाह रहा, या फिर वो वेट कर रहे हैं कि शायद सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक केस दायर हो या एफआईआर हो, जैसे कि रेसलर्स के मामले में हुआ। जब तक सुप्रीम कोर्ट और ये सब लोग नहीं आए तो उनको बैठने दिया गया सड़क पर। तो ये उसी तरह का केस चल रहा है। बट एनीवे, दिल्ली भी जहां तक बात रही, बहुत ही मतलब कि इनकॉन्सिक्वेंशियल से मैचेस उनको मिले हैं, बहुत अच्छे मैचेस नहीं मिले हैं। इंडिया और सिर्फ अफगानिस्तान यहाँ पर एक अच्छा मीन इंडिया का के एंगल से मैच मिला है। तो दिल्ली को भी इग्नोर उस तरह से तो किया गया है पूरी तरह से, और बाकी लोगों को, कई लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मैचेस दिए गए। Okay, let's talk about the Pakistan factor now. And Pakistan is scheduled to play in only 5 cities: Hyderabad, Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, and Kolkata. And as we were mentioning a little earlier, that the Pakistani team is very, very pro Chennai, going back to that standing ovation given to Wasim Akram's team when they beat India in the past. And their other preferred venue is also Kolkata, which is, as we all know, a pretty neutral, sports-loving crowd, and then they always appreciate good play, irrespective of who wins or loses. So again, Pakistan would prefer to play in these two venues, and Chennai might not happen at all. So CS, when it comes to the semi-finals, there are these calculations being held that in the first scenario and in the second scenario, if this happens, then what happens? Also, the way Pakistan has been averse to going to Ahmedabad, now it has split their own country in I won't say in half, but I read about Shahid Afridi saying in a very mocking way कि वहाँ क्या है, मतलब सांप बिच्छू छुपे हैं क्या, आप जाने में क्यों घबरा रहे हो? So on a more serious term, how do you analyze the Pakistani mindset? Even last time, if you remember 2011, there were problems. There were, a lot of issues that time. Obviously, BJP government was not there, but even then, there were troubling issues with Pakistani fans as well as the team. So now I don't think we are going to allow even a single, Pakistani fan, the kind of situation we have right now in India. So about team, Pakistan is never averse to going to or playing in Mohali. So why didn't we give them this kind of choice? But as Mr. Rajiv Shukla, the great cricket lover, as he says, कि it has not been cleared. तो आपने clearance में ही उसको तो खत्म कर दिया. So now, if you force them to play in Ahmedabad, it could well be आपके लिए embarrassment create कर सकता है. In the word cricket, in the word मतलब कि अगर आप politics की बात करें, तो ऐसा नहीं है, इंडिया की दादागिरी बहुत सी चलती है. अगर किसी टाइम पे उससे पहले भी जब इंडिया ने फोर्स किया था एक बार, जब श्रीलंका में इफ अजहरुद्दीन वाज द कैप्टन, आपको याद है जब ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था वहाँ की सिचुएशन को लेकर के, हम जाकर फ्रेंडली मैच खेल कर आए थे. तो एम्बेरसमेंट आपको कभी भी की जा सकती है. और इस टाइम पे भी पाकिस्तान में जिस तरह से नजम सेठी साहब जा रहे हैं, कोई और नए व्यक्ति आएंगे इस इलेक्शन के बाद, वो हो सकता है हार्ड बॉल खेलने, वो आपको ना यहाँ पर खेलने के लिए आपको मतलब कि आपको मना करे. और लास्ट मोमेंट पे आईसीसी का कोई मतलब नहीं है इस पूरे क्रिकेट में. आईसीसी होस्ट जरूर कर रहा है, लेकिन आईसीसी को बीसीसीआई के साथ रहना है. पैसा वहां पर है, उनकी अथॉरिटी चलती है, और इस चीज का फायदा इंडिया उठा रहा है. अगर आप एशिया कप उनके नहीं खेलेंगे या उनके वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, तो वो यहाँ क्यों आना चाहेंगे? इसे प्योर अगर आप पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं वो भी खेल लेंगे. अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेटिंग टर्म्स में, तो लास्ट टाइम भी वो आए, उनके इनफैक्ट हजारों लोग आए थे जो बॉर्डर पार करके वाघा के, और कितना अच्छा मैच रहा था. दोनों प्राइम मिनिस्टर्स वहां पर, मिस्टर गिलानी और मिस्टर मनमोहन सिंह वहां पर मिले थे. कितना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था. बट इस टाइम पे एटमॉस्फेयर नहीं है. ऐसे इलेक्शन के ईयर में आपको सिर्फ वही दिखाना है जो आप दिखाना चाह रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली है. History, I'll come back to you. Let's take a quick look at the India-Pakistan history, because there is a lot of discussion about the problem of playing bilateral cricket between India and Pakistan. So the latest information that we have is that India won't be playing Pakistan in any bilateral series in the 2023-27 cycle. Now, in the future tours program sent to all state associations, the board has kept the columns for games against Pakistan blank. Now, India has a pretty heavy itinerary in these years between 23 and 27. Indian men's team will play 38 test matches, 42 ODIs, and 61 T20s. But for me, the more interesting part is, which CS would also appreciate, is that when you look at the history of India and Pakistan have played a total of 203 matches.
Pakistan has won 88 matches, and compared to India's 72 wins. And also in test matches and ODIs, Pakistan has won more matches than India, although India has won 8 of the 12 T20 internationals. So, CS, the main thing that I want to come to you with is that, fair enough, because of the terrorism issue and the terrorist attack in Mumbai, India took a stand back in time that they will sever all cricketing ties with Pakistan. But whether it is hockey, whether it is kabaddi, whether it is football, the Pakistani team comes in here regularly, plays, they are welcomed. Yes. So why doesn't it happen in cricket? Why is this huge demarcation? Because if there is a problem of terrorism, if you do not wish to play with Pakistan for all of these reasons, then the same should apply to cricket. Well, ask our politicians. It's been for years and decades. We have been playing less cricket and more of politics, whether this government or other government. But for me, whenever you tour Pakistan, you are given. They are the best host. You can't expect any better treatment from any other country. Than whether as a journalist, whether as a fan, or whether as a cricketer. You ask anybody, they are the best host. So as far as the cricketing thing comes, I think this started in 2011. I remember, because that time government was different. Obviously, Mr. Lalit Modi during the auctions in Mumbai, I remember I was covering. Suddenly, एक पर्ची घूमती और सभी को कहा जाता कि किसी पाकिस्तान प्लेयर को पिक ना करो. I don't know what was the reason. I flashed it immediately. There was so much of भगदड़ जो वहां पर थी, उनके सभी प्लेयर खेल रहे थे, किसी को पिक नहीं किया गया, and there was no questions asked on this because simply क्योंकि जी उनके प्लेयर कोई फ्रेंचाइजी ही पिक नहीं कर रही है. तो this started with that thing, so we can't blame BJP for that certainly. तो क्यों किया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से क्या लाइन थी, ये उनका एक इशू था, मे बी आफ्टर जो आपने कहा मुंबई अटैक्स के बाद. अब रही बात कि पाकिस्तान की बाकी टीम्स आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सभी लोग अब तो पाकिस्तान भी जा रहे हैं. वो बॉयकॉट भी खत्म हो गया है जो 2009 टेररिस्ट अटैक्स के बाद जो श्रीलंकन टीम पे हुआ था और वहां कोई नहीं जा रहा था. अब ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इंग्लैंड जा रही है, सब जा रहे हैं. तो हम क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्या हम रिलेशंस अच्छा नहीं चाहते? क्या हम अच्छा क्रिकेट नहीं चाहते? फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स. वी कैन प्ले एट दुबई, वी कैन प्ले एट इन श्रीलंका और एनी अदर कंट्री. बट द पॉइंट इज हम ये एक हार्ड बॉल लेकर के चल रहे हैं. ये हमारी एक नई क्रिकेटिंग, जो पहले क्रिकेट क्या कहते थे कि क्रिकेट पॉलिटिक्स जो कहते थे हम, जिसमें मुशर्रफ साहब यहाँ पर आते थे. अच्छा, क्रिकेट डिप्लोमेसी, तो वो हमने खत्म कर दिया. अब जो डिप्लोमेसी है वो पूरी प्योरली, शायद वो जो टीवी डिबेट्स और ये जितना कुछ आपको सुन रहा है, वो एंटी पाकिस्तान वाले ही सेंटिमेंट्स आपको दिखेंगे. फॉर मी एज ए जर्नलिस्ट और ए क्रिकेट लवर, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पेनफुल सिनेरियो, जहां एक अच्छी टीम, बाबर आलम की टीम के अगेंस्ट हम खेलने को तैयार नहीं है. हमारी भी बहुत अच्छी, खैर हमारी तो टॉप टीम है, लेकिन जाइए खेलिए. एशेज का मजा कितना, लास्ट मैच हमने कितना एंजॉय किया, लेकिन एशेज से ज्यादा जब हमारी और उनकी बायलैटरल चल रही थी, इफ यू रिमेंबर, टिल वसीम अकरम के टाइम तक, तो हमारी सीरीज की जो आई बॉल्स थी वो ज्यादा थी रादर देन एशेज. लेकिन आज एशेज फिर से टॉप पे, सभी लोग उनके गुणगान और हम बैठे. I want to ask you a direct question, and my question is very simple, and it also you are in touch with many more sports journalists than me, but I have always wanted to look into the mind of a sports journalist like you, and who has covered cricket for so many years, and you know so many other people who have done so. So anyway, cutting to the chase, what I want to know is that between India and Pakistan, we've had wars, there have been issues of terrorism, and it still continues in some way or the other, which obviously Australia and England do not have such problems at all, mercifully. But can politics be kept separate from sport? Can politics be kept separate from cricket? Why can't there be a bilateral relationship where sport is concerned? Because one of the best unifying force between two nations is always sport. Absolutely. That's why we play sport. That's why we have signed the Olympic Charter. Every country, for that matter. If you remember 1980 Moscow Games, or subsequently 84 Los Angeles Games. If you remember, one एक धड़े ने, जो अमेरिकन था, उन्होंने पहले मॉस्को को बॉयकॉट किया था और बाद में मॉस्को के धड़े ने अमेरिकन गेम्स को बॉयकॉट किया था. क्या हुआ था? गेम्स खत्म हो गई थी. ओलंपिक्स का कोई मतलब नहीं था.
तो सडनली ये सब लोगों में ये जो कहते हैं ना कि बेटर सेंस जो प्रिवेल की थी कि लेट्स नॉट फाइट इट आउट देयर ऑन पॉलिटिकल टेबल्स, लेट्स फाइट इट ऑन देयर, और सब चाइना ने भी फिर उस चीज को साथ दिया था, और अब तब से गेम्स बिल्कुल ठीक चल रही है। जब इजराइल सभी किसी भी कंट्री को जब ओलंपिक्स में खेल सकता है, जब इंडिया पाकिस्तान ओलंपिक्स में खेल सकते हैं या हॉकी में या बाकी गेम्स में, व्हाई नॉट इन क्रिकेट? क्रिकेट में सबसे बड़ा मनी स्पिनर आपका ये नहीं हो सकता है कोई भी मैच की, इवन द बैटिंग सिंडिकेट जो सोचिए, बैटिंग जो इंडिया पाकिस्तान मैच की लगती है अबाउट 17,000 करोड़ से ऊपर की पर मैच की एक एस्टिमेट है। दूसरे बाकी किसी भी अच्छे से अच्छे मैच की भी 10-12 हजार करोड़ से ऊपर की नहीं लगती है। सो दैट इज द काइंड ऑफ स्टेक्स, तो हम क्यों नहीं खेलना चाहते? लेकिन वही मैंने कहा ना, इसे प्योर पॉलिटिक्स सेंटीमेंट्स जो कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल सोच है, मुझे इन लोगों की कभी समझ नहीं आई। बट द फैक्ट इज we could be embarrassed, in the coming days. Agar Pakistan plays a hard ball and they refuse to play in Ahmedabad, let me tell you, it will be a big embarrassment for every cricketing nation, for that matter, ICC, Asian Cricket Council, and India especially. And how long can this go on that that Pakistan is supposed to come in, and even in the Asia Cup, then the hybrid model came into play. First, Ramiz Raja was there, who was still handling it well. Then Mr. Najam Sethi comes but in. But we first refused to play. That yes, is the problem. Yes. We first refused. हमने जो कहते हैं ना कि जो एक पैक्ट था कि इंडिया यहाँ खेलेगा, ऐसा खेलेगा, वो सब पैक्ट हमने तोड़ा. So we can't blame some other country for this. अगर हम कहीं भी उनसे खेल रहे होते, या जो मॉडल उन्होंने लाया था हाइब्रिड वाला भी, अगर हम उसको मान लेते तो शायद उसमें प्रॉब्लम ही ना होती. और प्लस सबसे बड़ी बात थी, हमारी कमिटमेंट थी पाकिस्तान जाने की. उनका जो मेन प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के बोर्ड को ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है. आप समझिए, दे आर बैंक करप्ट ऑलरेडी. वो पैसा कैसे आएगा जब वो सीरीज को होस्ट करेंगे? इफ यू आर होस्टिंग सीरीज इन से दुबई और एनी अदर कंट्री, तो मैक्सिमम पैसा चंक वहां चला जाता है मैच ऑर्गेनाइज करने का. तो उनका जो सबसे बड़ा आपसे जो प्रॉब्लम है, या जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है, वो ये कहते हैं कि आपने अपनी कमिटमेंट तोड़ी है, सो डोंट ब्लेम अस नाउ फॉर एनीथिंग. तो ठीक है, उनके बॉल इज इन देयर कोर्ट. मैं तभी कह रहा हूँ देयर कुड बी एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया इन द कमिंग डेज. Okay, so let's wrap this up. And it is very, very clear on this show that there is politics in cricket. There is lack of cricket diplomacy. There is also a problem in allotting venues, because there is a massive pushback coming in from non-BJP ruled states. We can't shy away from that. We need to discuss it, understand, and figure out why it is happening. And like CS very openly said, that he and many other sports journalists are in favor of a bilateral series, because sport is the greatest binding factor. Let's not forget that, and hope that this problem gets sorted out. Well, it won't happen anytime soon, but hopefully it should someday. We'll leave you with those thoughts. Thank you very much for watching, and CS, thanks very much for your company. Thank you, but never take Rajiv Shukla seriously again. I'm telling you, he has no clue about cricket. आप मरवा दिया आपने मुझे, वो मेरे दोस्त हैं. But he's my friend also, but he has no stakes in cricket. Let me tell you. Okay, we'll leave it. Goodbye, and thank you. Thank you.